Okay, it is showing just it is starting. Okay, fine. Okay, am I audible, right? I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. So I was telling ki, party 1 and party 2, if they want to borrow the money, okay. So what they need to do, borrow money in the sense they will raise some bond, right? So for example, party 1 को दरकार borrow करिया था पैसा दरकार, then से कौन करेगा गोटे bond issue करेगा, and से bond ऊपर interest से मांगिबो, correct no? Then जहाँ को से bond टा दबो, से ताको पैसा दबो, हाँ कि नहीं? For example, party 1 will give the bond to party 2, and party 2 will give the money, correct no? And ए bond रे से बर्तन कहबो कि ठीक अछि मु जो interest rate टा देबी सेटा मु केते देबी, okay? तो basically जो interest rate टा सेटा से माने कोन करथि ना, they will try to make a balance between the inflation that is going to happen in the future, not inflation that is related to the fluctuation in the interest rate. So if you see the option 1, so whenever we are saying the interest rate swap, it is nothing but it is the exchange of future interest payments between two parties to reduce the exposure to the fluctuation in interest rate. For example, एमाने कहउछन कि ओके ठीक अछि मु गोटे काम करी 3.5% रे मु बर्तन कोन करी कि bond issue करूची and 3.5% मु interest देबी. Let's suppose LIBOR interest rate is 2%, and on the above of LIBOR 2% I will give you 1.5% extra. Now in future जदि सेटा 4.5% वगैरह जहां भी है ना, ताले से जो करेंसी एक्सचेंज रे जो चेंज आसीबो, बिकॉज़ तमे गोटे बाहर रो करेंसी आउछ, करेक्ट नो? तमे जेतले गोटे बॉन्ड देलो, तमे बर्तन जो लोन आनिबो, you might get it in foreign dollar also, correct? But the thing is, you are saying like it won't have any implications, okay? So जो interest rate ता आसीबो मते ता exposure करियार अछि ना, जो आगु को जो fluctuation होबो interest rate रे ता ऊपर कोनोसी जिंसो किछि changes आसीबो, that is related to this interest rate swap. So if you see, the option 1 is correct. Now it involves the exchange of debt assets and payment of full amount of interest due. When it is saying involve the exchange of debt assets and payment of full amount of interest due, no, that is not correct. It is not correct. Anyone? Because they don't take the ownership of the debt, no. Basically they will take a contract कि ठीक अछि आमे कोन करिवु जो फ्लक्चुएशन होउची ता ऊपर हम गोटे बॉन्ड इशू करछु, okay? So in that basis we will try to issue, basically that's what we are saying, the interest rate swap, okay? So they don't exchange this debt assets, okay? Debt asset पूरा करने. यार voice break हो सर, किस सुबह सर. Okay, is my voice is still breaking for other? एबे ठीक सुबिला सतले किंतु होउथिला त. Okay. Okay, I was saying interest rate swap, जोड़ा मु कोन कहउतली इंटरेस्ट रेट स्वैप हमें केतले करूचे कि ना, जदी हमकु लागुची कि फ्यूचर रे गोटे फ्लक्चुएशन होबार अछि इंटरेस्ट रेट, तो से माने कोन करंती, से माने ट्राई करंती दीटा पार्टी भितरे से माने गोटे कांसेप्ट आनंती कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप दैट इज रिलेटेड टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके? सो सेही कॉन्ट्रैक्ट रे से माने कोन करिवे ना, से दी जणा पार्टी से माने भितरे म्यूचुअली गोटे इंटरेस्ट रेट स्वैप करिवे, जोथरे कि से माने एक्सचेंज को फिक्स कर देबे कि तांगर जो एक्सचेंज रेट से माने करूचंदी इंटरेस्ट रेट ऊपर जोटा फ्लक्चुएशन फ्यूचर रे आसीबो ताको रिड्यूस करिया पई जो इंटरेस्ट रेट से माने यूज करिवे, दैट इज रिलेटेड टू दैट इंटरेस्ट रेट स्वैप. इज दैट क्लियर? द पार्टी सर दे एटा डोंट कोन खाली हेलो सर एटा कोन खाली एक्सटर्नल बोरोइंग रे होबो ना कोन? हां, एक्सटर्नल बोरोइंग रे ना, इंटरनल ले तमर तो इन्फ्लेशन वगैरह थिबो ना, जोटा हम ऑलरेडी कहतले नेगेटिव रियल इंटरेस्ट वगैरह. सर बुझियन कांसेप्ट आउथरे देखो. For example, there is a party 1, there is party 2, correct? Yes sir. दीटा पार्टी अछंदी. Yes sir. Am I audible? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so Yes sir, audible. I was saying, let's suppose there are two parties, right? Party 1 and party 2. बर्तन से माने कहउछन्दी आमे दी जणवा भितरे आमे स्वैप करिवु. स्वैप एथि पय करिवु बिकॉज़ हमकु दरकार कोन पैसा, पार्टी 1 को पैसा दरकार, ओके? तो जतले पार्टी 1 को पैसा दरकार से काम कहबो, से कहबो ठीक अछि मु गोटे बॉन्ड इशू करिवि, हां कि नहीं? जो बॉन्ड इशू करिवि मे बी मते गोटे फॉरेन रो मु करेंसी आनिवि. फॉर एग्जांपल पार्टी 1 इज इन इंडिया एंड पार्टी 2 इज इन यूएस, ओके? तो बर्तन डॉलर और मनी रो वैल्यू भी चेंज हो जाए ना, Yes sir. करेक्ट नो? एंड बिकॉज़ ऑफ दैट जदी मु एठी कहबि 3.5% रे मु गोटे इंटरेस्ट रेट देबि, देन मे बी से टाइम रे मते प्रिंसिपल ऊपर अधिक पैसा दବାକୁ पड़ी पारे, ओके?
So there are different concept of interest rate swap. There is something called fixed to floating. Okay, fixed to floating rate. Yes, sir. We don't have to go much detail into that. Floating to fixed. Okay, there is one more concept called, see, fixed to floating, floating to fixed. There will be float to float. Okay, there will be float to float. These are basically the options that will be available for the interest rate swap. So एठी से कहो कि चलो आमे 3.5% रेट रे आमे इंटरेस्ट रेट फिक्स करिया. Then जदि फ्यूचर रे गोटे फ्लक्चुएशन आसिला इंटरेस्ट रेट रे ताहाले भी आमे कोन करिवु आमे जो वैल्यू लेइछु आमे ता अनुसार चलिबु. For example, let's suppose there is a company. You can take up example of, let's suppose XYZ company. Okay, let me erase it. Give me a second. सर सेतिबे से माने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करिवे ना. Correct, से माने कॉन्ट्रैक्ट करिवे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. Yes, Okay, sir. so let's suppose there is XYZ company. Okay, बर्तन XYZ company को दरकार $100 million. Okay, केते दरकार $100 million. कहाँ, let's suppose something ABC company. बुझिए ना. And XYZ company is in India. ABC company is in USA. Correct? Yes, sir. Okay. Now they may be able to borrow the money with, let's suppose, some 4% interest. किए XYZ company कहूची कि मु borrow करिया को चाहूची काहाटू ना ABC company with 4% interest. हां कि नहीं? Yes, sir. But एठी कोन हे पारे मे बी से मान को लागे पारे कि नहीं 4% जगह रे 3.5% आउटसाइड जदि हमें borrow करूचू. ओके, कि there are two companies, गोटे होची APC आ गोटे होची XYZ. Yes, sir. Okay, तो इन फ्यूचर जदि एटा 4.5% ही गला. ओके, देन से माने आगु ऑलरेडी गोटा कॉन्ट्रैक्ट कर दिजन कि भाई ठीक अछि जहां हमर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट थिला कि 4% जोटा कि हमें फ्यूचर रे जो फ्लक्चुएशन होबो इंटरेस्ट रेट रे बिकॉज़ ऑफ दिस डॉलर टू मनी चेंज एंड ऑल, तो ता ऊपर हमें कोन से जीवनु हमें केते जीवु 4% जो इंटरेस्ट कि तमे ऑलरेडी गोटा कहि दो ना कि तमे दि जण पार्टी भीतर तम कथा होछ कि भाई मते गोटे जिंस नवार अछि मु तते एती % इंटरेस्ट देबी. फॉर एग्जांपल RBI 2000 टका तम कोज गोटे नोट देछि एंड से नोट रे से कोन लिखुछि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर to give this amount, right? Whenever you go for the return, you will get the sum of 2000, correct? No, either 100 टंकिया 20 टा तुमको मिली जीवो या फिर 5 टंकिया 4 टा मिलियो. से कोन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करिए तुमको पैसा दबो कि No, sir. दबोनी ना. So this is related to that interest rate swap. It is the exchange of future interest rate payment between two parties to reduce exposure to fluctuation in the interest rate that will be coming future. Next, it involves the exchange of debt asset and payment of full amount interest. No, this is a contract. Okay, so eta कौन सी debt asset से कौन सी exchange हुए नहीं. So this statement itself is wrong. So 2 is wrong here. Then the third one, it is traded over the counter. So what is over the counter? Anyone knows what is over the counter? Voice break होची sir. Okay, am I still not audible or it is happening only for few? होची सर आपण कहिले माने ठीक से बुझी कोन पढला बेले तो कहिले ठीक से बुझी किंतु जदी किछि स्क्रीन रे कार होची ताले सुबुनी कि टाइम रे ना ना माने पढला बेले लगातार जंती ये कला बेले सेटा वॉइस ब्रेक होची खाली जेतला आपण को ठीक से बुझी तते से बुझी. अच्छा ठीक अछि. ओके, सो ओवर द काउंटर कोन हुए ना जेथरे हमें ट्रेडिंग वगैरह करू. फॉर एग्जांपल ओके हमें किसी सिक्योरिटीज वगैरह ट्रेड करू, so that will be related to the over the counter trade and it is saying that it is not on public exchange. So it is true, the interest rate swap that we do, that is over the counter and not on the public exchange. For example, over the counter जदि तमे देखिबो तो तार कांसेप्ट होची कोन ना जेतेले तमे किछि ट्रेडिंग वगैरह करूछो. Okay, there are something called listed stocks and something called unlisted stocks. Okay, so जेतेले तमे कहूछ listed stocks, when the stocks are traded on exchange. Okay, for example, you have New York Stock Exchange, you have Bombay Stock Exchange, right? Those are called listed stocks. And when you are saying unlisted stocks, those are related to the over the counter. Basically we use the concept. So unlisted stocks, when they are get traded, they are trading through the over the counter. So these interest rate swaps, तमे वर्तमान कहूछ तुम पैसा दरकार, देन तमरो स्टॉक कोन लिस्टेड हेथिबो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर No, कोन sir. स्टॉक एक्सचेंज. नो, राइट? देन इट विल बी रिलेटेड टू द ओवर द स्टॉक काउंटर. इज दैट क्लियर?
not on the public stock. The public exchange is related to that Bombay Stock Exchange, जो public वगैरह use करोगे. Correct. Is that clear? So option 1 and option 3 both are correct. Fine. Am I audible? Yes. Okay. Yes. Coming to the Yes. next question, in the context of international trade, countervailing duty can be imposed on a product if the product has potential of harming environment on the destination country. Is this so? There will be No, sir. something called sanitary, phytosanitary measures and all, right? Sir, Yes, sir. But when we say countervailing, see, we talked about under GATT, under GATT, there are two things. One is there will be something called dumping duty, anti-dumping duty, Yes, sir. and there will be something called countervailing duty, right? But a subsidized countervailing duty. So anti-dumping कौन? For example, China market रे China तार जिनस को 100 टका रे बिकुची, किंतु India market रे से केते टका रे बिकुयो? 80 टका रे. Yes, sir. While India market रे से जिनस को 110 टका रे बिकाउची. That means this is called dumping. निज market रे 100 टका, किंतु निज market रो कम rate रे से अलगा market रे बिकिवा. That is dumping. What is counter dumping? Counter dumping होची कौन? Sorry, countervailing duty कौन? ना तमे निज market रे, not निज market रे, तमर निज कंपनी मानू तमे कोन करछो सब्सिडी दे दोछो अधिक ताकि तमर प्राइस कमे दियो. हां कि नहीं? Yes, sir. तम प्राइस कमे गला. लेट सपोज वियतनाम मने पका वियतनाम रो जो आसुची ऑयल हेतरे हमें कोन डंपिंग ड्यूटी लगोतले कि हेतरे हमें कोन लगोतले काउंटरवेलिंग ड्यूटी. काहे कि बर्तन से जो ऑयल सेटा केते फॉर एग्जांपल इंडिया मार्केट रे 100 टका एंड सी ऑलरेडी सब्सिडी वगैरह दोची तारो सेमिति रे भी कम कॉस्ट. तो जदि सेमिति रे कम कॉस्ट बिकॉज़ मे बी पारे नारियल वगैरह तारो अधिक प्रोडक्शन होतो जोथि बेंकी कम कॉस्ट. सो बर्तन से कोन कहूची 50 टका रे निज मार्केट रे भी से 50 टका रे बिकुची प्लस इंडिया मार्केट को भी से 50 टका रे चाडुची. देन हियर यू आर गोइंग टू इंपोज काउंटरवेलिंग ड्यूटी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So now this is not related to anything related to environment. So the option A is wrong. The product has the potential of destabilizing the currency of the importing country. जो country import करूची से ठीक currency को से destabilize करिवो. Okay, we'll see this. Option C, the product has not followed standard sanitary rules during the production process. Sanitary rules, this is related to technical barrier to the trade. से वाला जिनस जो हमें correct. So this is not related to technical barrier to the trade कि हम चलो से माने जो मैंगो पर अधिक कार्बाइड वगैरह दिया है ची XYZ जो थी बैंक हमें यूज करिवनु because lot of fertilizers, lot of chemicals. तो से गुड़ा होची barrier दोजो trade. These are related to tariff, right? So this is not true. The product has received an unfair advantage through export subsidy in the source country. This is correct. Countervailing duty हमें अधिक subsidy दिया होची सेतले लगोची. Okay. Now coming to B. See, obviously D is correct. Now B is also saying the product has the potential of destabilizing the currency of the importing country. बर्तन जदि import जने कला अधिक रु अधिक ताले तार currency कोन हबो जदि ए जिंस को तमे allow करि देला and सेठी कोनोसी countervailing duty न लगै द. Okay. Okay, so if you see, actually I am saying the question itself says कि in the context of international trade countervailing duty can be imposed. वर्तमान कथा होची कि जदि से destabilize करूची then सेठी त हमें countervailing duty लगबेनी. We will have the different RBI रो measure accommodative measure. safeguard duty safeguard duty लगेगी. हां safeguard duty लगतो. Right. Then we have that accommodative measures of RBI, autonomous and accommodative. Yes sir. Autonomous and accommodative. Correct. So accommodative, for example, तमर balance of payment को zero करिया पई जदि already बहुत सारा import हे जाई, that means बहुत सारा पैसा तमर बाहर को पड़े छी, right? होंगे ने डॉलर तमर बहुत जाई छी ता माने RBI को बहुत डॉलर निज forex रो सप्लाई करियो पड़ियो. होंगे ने this will be related to accommodative and बहुत पड़े छी जो by default autonomous रे that is related to autonomous, right? That also we already discussed. Okay, so here the answer will be only D. The product has received an unfair advantage through export subsidy in the source country. Source country in the sense Vietnam. Is that clear? Sir, B point तक clear कर लेना.
B point is nothing related to this countervailing duty. See, it is saying जदि तमे अधिक रु अधिक import कल कम दाम रे, then it would have potential of destabilizing your currency. So जेतले तमर destabilization of the currency हबो, it is nothing related to countervailing duty. Even it is also having a potential issue for the dumping also, no? जदि गोटे dumping है, see, whenever there will be less price in your market, correct? जदि गोटे बाहर गोटे जिंस आसा जार प्राइस ऑलरेडी कम रहउची तम मार्केट रु, तो सेटा सब केस रे हबो तमर करेंसी रो डिस्टेबलाइजेशन हम कि नहीं एमिति रो केवल काउंटरवेलिंग ड्यूटी हबो, बट काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज रिलेटेड टू दिस सब्सिडी वगैरह देकी तमे कमाई दोछो, जोथि बेंगी तो तमे कहउछो ना कि यूएसए वगैरह ताको को से माने कम सब्सिडी दियंतु, करेक्ट? ऑलरेडी जो माने डेवलप्ड नेशन जदि से माने एठी के आणुचोंदी किछि जिंस ताहले आमे सेथरे इंपोर्ट ड्यूटी लगेबो, किंतु से माने आमे जदि किछि जिंस पठौछु से माने इंपोर्ट ड्यूटी न लगांतु, आमको सब्सिडी दबार अछि, वी डोंट एग्री टू दैट सोलार रिलेटेड थिंग, करेक्ट? सोलार रे आमे सब्सिडी दोछु होंगी नहीं, सोलार पैनल देन केस चलतिला एंड केस वर्तमान भी पेंडिंग ही अछि बिकॉज़ वी वेंट टू हायर कोर्ट्स, बट हायर कोर्ट्स इज एम्प्टी, करेक्ट? देयर आर नॉट मच Appellate cases, appellate court. appellate tribunals, correct? Yes, sir. So the next question is the economic cost of food grains of the Food Corporation of India, FCI. So FCI, agriculture sector. So जदि तमे देखियो agriculture is nothing but primary sector. Now in primary sector of which is agriculture, तो आमे एतरे देखिले input related जिंस कि land विषय रे कथा होतले, seed विषय रे कथा होतले, fertilizers, water ए सब जिंस देखिले, then सब किछि हेई गला, ठीक अछि, प्रोडक्शन हे गला, then बर्तन कोन होती फार्मर को गोटे पर्टिकुलर प्राइस भी मिलवा दरकार, नहले फार्मर को कोन करिवे, लोक माने ट्राई करिवे से मानकू एक्सप्लोइट करिया पय, करेक्ट? कि से माने प्रोडक्शन करिवे, से मानकू कहबे कि भाई हमें 5 टका दे, ताको जो पुराना काल रे जा चालुतिला, करेक्ट? से सब जिंस स्टार्ट हबो, मु तते ऋण देइथिली, तू मते बर्तन तू पैसा सुझी पारनो, तोर सब तक धान मु नेकी पळेबे, something like this will happen. So FCI, Food Corporation of India, they will try to do what? Procurement of these grains and all, right? हाँ कि नहीं? Am I audible? ठीक है। voice break होउची किंतु हाँ, voice break किंतु होउची नो. Okay. What I can do, I don't have any other connection, only 2 connection. One is my Wi-Fi and one is my personal. सर एक्चुअली नेटवर्क इशू वजह से हम लोग तो क्लियर आ रही है, बस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है नेट इशू वजह से। ओके, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए सर, we'll see. Okay, so now the question is FCI procurement वाला. Okay, so बर्तन कथा होची the economic cost of food grain to the Food Corporation of India, that will include minimum support price MSP से माने देबे, FCI दबो ना दबो नहीं? Option 1 is correct. So B is ruled out. Storage charge FCI बर्तन जो मंडी वगैरह से जो स्टोरेज वगैरह करिवे ता पई पैसा के दबो? FCI दबो ना? FCI, yes sir. 2 is also correct. So 2 is all present everywhere. Then distribution cost और जो PDS वगैरह रे जाके डिस्ट्रीब्यूट हबो सेथरे भी कॉस्ट FCI दबो. And fortifying cost जो रखिबो जेमति कि हुडा fortifying इन द सेंस तमे देखिथिबो इंग्रेज मान तळे सब जिंस आनी कि गोटे गैदर करथले गोटे, राइट? तार सुरक्षा करिया पई ता पई से माने जो फोर्टिफिकेशन करथले से सब जिंस भी FCI करिया पड़िबो कि नले जणा पडला कि धरि कि पळेला, से सिक्युरिटी मेजर वगैरह सब किना पड़े. So this will be also related to FCI. So that means 1 2 3 4 all, right? And related to FCI we also studied something called extra budgetary resource, EBR. मने पड़ो? See, budget रे for example agriculture sector रे कुआला कि 10,000 crore will be given. Okay, this has to be sanctioned. Now 10,000 कोटी में भी FCI को मिली न थाई पारे, मींस सब तक तो FCI को मिलिबोनी, मे भी भाबिनियो FCI को से माने 5,000 कोटी टका दबा कथा, बट ए पर्यंत देई नांदी, ता माने कोन FCI प्रोक्योरमेंट करिवोनी कि? FCI को तो प्रोक्योरमेंट करियो पड़िबो ना, एंड जेहेतु FCI को प्रोक्योरमेंट करियो पड़िबो, देन FCI को पैसा मगेइबो, तो FCI काहाटू पैसा नबो? लोन रे पोस्टल डिपार्टमेंट रो नबो, राइट? Yes sir. So off budget resource करेक्ट, ऑफ बजेटरी रिसोर्स, off budget resource. करेक्ट. तो बर्तन एथिरे कोन हला ना ए जो एक्स्ट्रा जो लोन लेला, ठीक अछि, पर जेते बेले ताको पैसा मिलियो 5,000 कोटी टका, सेतले से जो लोन ले जे तार प्रिंसिपल तो सुझी दबो. व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट रेट?
सेटा को तो तमे केबे कैलकुलेट ही करिना बजेट रे जेतले आमे कैलकुलेट करूथले बजेट रो जेतले आमे एक्सपेंडिचर देखुथले रेवेन्यू रो सेतिर गोटे आस्तला ना कि आरबीआई वगैरह को से जो इंटरेस्ट रेट दउची काहे ना से लोन नै थियो आरबीआई रो हम कि नै कैपिटल पार्ट रे डेब्ट सेक्शन में से लोन नै थियो Yes. तार इंटरेस्ट ता से पुनी पेमेंट करिवो Yes, sir. करेक्ट तो जेहेतु पेमेंट करिवो किंतु एथिरे जो ऑफ बजेटरी रिसोर्स हैला से जो पोस्टल को जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट हबार अछि इंटरेस्ट रेट वगैरह से गुडा तो बजेट रे देबे कथा ही ना हां कि नहीं so Yes, sir. जी सर you should also remember that FCI this has a relation with that extra budgetary resource or off budgetary resource is that clear ये तो फिजिकल डेफिसिट पे कैलकुलेट ही करना हाँ ही करिए okay next consider the following statement food corporation of india सर एमएसपी टा सर एफसीआई रे माने कि हाँ हाँ हेलो सर सर एमएसपी टा एफसीआई सर केमती जीवो टिके सर एमएसपी टा एफसीआई रे केमिति जीवो सर सेटा तो सर सीएसपी डिसाइड करिवो एफसीआई तो सर पेमेंट तो सर गवर्नमेंट करिवो एफसीआई किंतु जो एमएसपी रा जो पैसा गोडा दिया हबो एमएसपी पे हमें कहते ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड हबो देन प्रोक्योरमेंट टाइप ओके सर 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 प्रोक्योरमेंट तो सर एफसीआई करिवो सर किंतु पेमेंट करेनी सर प्रोक्योरमेंट एमएसपी प्राइस रे सर सेटा तो गवर्नमेंट डायरेक्ट पेमेंट करे सर फार्मर्स को अकाउंट्स को तांकर जो डीबीटी रे जाए सर हाँ जेमति कि सर हमें पेडी की ये प्रोक्योर करछु सर एफसीआई खाली मीडियम थाए सर एफसीआई was just a medium you are saying that सर सर जेमति खाली स्टोरेज करिवो किंबा एई स्टोर पॉइंट को से स्टोर पॉइंट को किंबा सर ताको ये करिवो सर सेटा no here कारण सर हमर जो सर फूड एंड जो कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट जोटा अछि सर तो डायरेक्ट पेमेंट करछि एमएसपी रे फार्मर्स मानन को सर correct we have all those things we already discussed also like how the payment has been done jodi darkar sir sir then we have different that IAS Rankan Yojana right so sir, here this MSP if you will talk about let's suppose talking about the acquisition cost okay कि जो मंडी थ्रू रे से जो जितकी पैसा खर्च हबो से जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ओके से ट्रांसपोर्टेशन प्लस जो जितकी ताको पैसा दे हबो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ए जो टोटल यू टॉक अबाउट द इंसिडेंटल कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट कमे कथा को सर तो सही ओवरऑल कॉस्ट से गुडा के डिसाइड करिवो एमएसपी को नै की सर एमएसपी सर एफसीआई सर एमएसपी एसपीआई सर जो सर हमरो एफसीआई सर फिक्स करछि कि सर पेमेंट सर जेमि करछि गवर्नमेंट करछि कि एमएसपी सर फिक्स करि सर हम एफसीआई सर करेक्ट ऑब्वियसली एफसीआई पाखरे तो सेति की इंटेलिजेंस नाही कि चलो समस्त आधार कार्ड मोने बी देन सब किछि डाटा बिकॉज़ इट इज वन ऑर्गेनाइजेशन राइट गोटे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हां कि नहीं बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल प्रोडक्शन नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट दैट एक्विजिशन कॉस्ट करेक्ट नो पूरा नहीं कि स्टार्टिंग रु नहीं कि ताकू पीडीएस जाए पहुंचेबा जाए प्रोक्योरमेंट रु नहीं कि पीडीएस जाए पहुंचेबा जाए जो जो कॉस्ट ओडा लागु छी सब तक आसी जो कहा अंडर रे ना एफसीआई अंडर रे ओके तो बर्तन तमे जो कहछ डीबीटी बैंक ठीक अछि तमे कहो कि लोकर फॉर एग्जांपल फार्मर रो बैंक अकाउंट को जो पैसा आसला सेटा के देला दैट इज बियर बाय द गवर्नमेंट यस सर हां कि नहीं से पैसा डा किंतु जस्ट जदी तमे कहलो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एथरे जदी आउ तीनटा ऑप्शन तमे देखियो दिस इज रिलेटेड स्टोरेज कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फोर्टिफाइंग कॉस्ट तो एतिकी तो को कि ठीक अछि जो एफसीआई पूरा सर हां मु कहू छी एफसीआई थ्रू द एक्विजिशन की मंडी वगैरह बने की से ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी वगैरह आने की ताको स्टोरेज यूनिट रे रखी की तारो इलेक्ट्रिसिटी बिजली वगैरह से जो स्टोरेज यूनिट देन फोर्टिफिकेशन ये सब किछि रो पैसा गुडा की आकलन करे एफसीआई करेक्ट नो सर okay so in that way we are saying this minimum support price is also bear by this FCI means the paisa ठीक अछि पैसा से दउनी गवर्नमेंट दे दिउची okay that is through the DBT that is different thing but everything is coming under this FCI is that clear yes sir okay then coming to the next question Food Corporation of India FCI is a statutory organization constituted under the National Food Security Act is this correct see this NFSA no this is not under NFSA it is under No, sir. Food Corporation
Yes. 1971 see it's 1971 now. Food Corporation Act 1974, right? Yes, Sorry, 64. 1971 no? Yes, sir. 1964. Okay. Yeah. So that means option 1 is wrong. Yes, sir. Correct. No? Okay. Then going to the next option, we also got the answer. Answer should be C because option 1 is wrong. This is the method called elimination, because I knew last time few people were saying like we don't know what is elimination, so we could not able to go to the answer. But this is how it works, right? Go to answer, go to the option and see. If you are 100% sure, right? If you are 100% sure, then cross all this and go to the last one. Okay, that is fine. In this case, it is only one is there, so we are directly assuming that is the answer. But let's see. National Agriculture Cooperative Market Federation (NAFED) works under the Union Ministry of Cooperation. NAFED, is it under Union Ministry of Cooperation? No. She's on agriculture. Union Ministry of Cooperation. We talked about AMUL, cooperative society. Cooperative Right? companies. Correct. But this NAFED is under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Okay. NAFED is under tribal under. Agriculture and Farmer agriculture, tribal under. Okay. So this one is wrong. Next, Small Farmer Agricultural Consortium (SFAC) is the lead implementing agency of ENAM. Okay, this ENAM is related to again that Mandi wala issue, right? So Mandi issue over then state government support करूनाहांती या फिर farmer को may be proper पैसा मिली पारुनी, then हे पारे कौन farmer को कुआ कि तमे online portal रे show करो ताकि even there will be other state who will also likely to procure your product with a higher price. For example, normal तमे 1500 टका बिकुछ किंतु तमिलनाडु कहउची मु 1800 टका दवा राजी अछि, महाराष्ट्र कहउची मु 1900 टका दवा राजी अछि. तो एठी कोन हैला बेसिकली ऑप्शन मिली गला, बेसिकली तुम गोटे बिडिंग मिली गला, करेक्ट फार्मर मानु. सो दिस ई-नाम पोर्टल नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट याकू किए यूज करे ना, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एसएफएसी. इट इज द लीड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी. दिस इज ट्रू. Mone rakho, there will be Small Farmer Agri Business Consortium (SFAC), who is the nothing but the lead of implementing agency of the ENAM. Is that clear? What is ENAM? Is it clear? सर एथिरे ई नाम भितरे एपीएमसी रो मंडीज भी आसिया दरकार. सब मंडीज को ई नाम रे नै परबो. एपीएमसी मंडीज आसिया दरकार ई पोर्टल. जो एपीएमसी भितरे जो मंडीज गुडी को रजिस्टर्ड ही थिबे सेही माने ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी जोटा जो तो से ऑथराइज करथिबो, देन सेही मंडी गुडी के एपीएमसी रे थिबे, एपीएमसी ई नाम. Correct. APMC मंडी थ्रू रही हमें जिबा ENAM को, right? All the existing APMC mandis basically does APMC. बहुत voice break सर. Okay, am I audible now? Or else I'll do. Yes, sir. Voice broke. Yes, sir. I'll do one thing. I will stop the class otherwise here because it will be again wasting of time. Okay. That wala tum mane kisi revise karo. Fine. So I will continue again tomorrow morning 8 AM. Will that be okay? Yes, sir. Okay. So we'll stop. We don't want to unnecessarily waste the time. Okay. Please try to revise. Okay. We will continue tomorrow morning 8 AM. Okay, Okay, sir. Night. Okay.